Hello everyone, good evening. Today we are going to learn how you can use all the features on StockEdge for investment purpose. I'm going to share my screen. If anybody is not able to see the screen, please inform me beforehand. I hope I'm audible. Okay. Thank you, Subha sir. Thank you. Thank you for the confirmation. So I'll start with the best feature for investment on our app. You'll find that under analytics option, that is investment ideas. Under investment ideas, you're going to find more than 130 companies, and it's around 137 companies for which we have prepared detailed case study. And all these companies are good for long-term investment. Since we have prepared a detailed case study on this, we have scored all these stocks based on different measurements. If you click on the spider chart, you'll get the scoring detail, how this company has performed on the basis of profitability, efficiency, solvency, and all other parameters. So if you can see the edge meter, you'll find there are some stocks which have scored around 24 to 25. There are some stocks which have scored only 21 and 22, but all of these stocks are good for investment, especially the long-term investment. If you click on the PDF option and thereafter view report, you'll get the detailed case study report that I was talking about. In this case study section, you are going to get the past financials as well as management update. Apart from that, you are also going to get the valuation tab. Under the valuation tab, we have discussed how this company is standing at the present in terms of its market price, how the PE has been, and thereafter you will get the most important page on this valuation, which is key levels. Under the key levels, you'll figure out at which price level the stock is going to be good for investment, and at which price level you'll the stock might face some profit booking. The key level is also present on this column. You can see for each stock, key level has been mentioned. Apart from the key level, there is this gap from last trading price. We have calculated the percentage so that an investor can understand at what range the stock is trading from its key level. If the stock is trading around 2 to 5%, or it is trading around 15 to 20% from the key level. So if the stock is trading at 0.23% only around its key level, it means the stock is good for investment at present. See, what did I do? I just clicked on this key level, that is the green highlighted zone. The stock is coming near its support zone, and once the support zone is reached, the stock might face demand once again, and stock price will come up. I can show you another example of it. See Avenue Supermarts. अगर आप अवेन्यू सुपरमार्ट्स को देखेंगे तो इसके पहले भी की लेवल्स के आसपास आते ही स्टॉक में वापस से डिमांड दिखाई दी थी एंड स्टॉक प्राइस ऊपर गया था. Again, the same story is repeating. The stock price has come down post correction. Now the stock is trading near its key level, and since it is highlighted in green, we call it accumulation zone, because investors are expected to accumulate the stock around this level. Not only Avenue Supermart, since the market has undergone a bit of correction, you can see there are many stocks which are good for investment at present. Now coming to the red zone, that is like CDSL is trading around its distribution zone, at which the stock usually faces profit booking. If you can see, at this price range, the stock had come like 15 से 16 तारीख के आसपास में स्टॉक ने इस प्राइस को रीच किया था, एंड स्टॉक प्राइस
में automatically profit booking आ गई थी and stock price came down. The same thing got repeated on 7th of November. So अगर आपको red highlighted zone के आसपास कि स्टडी वाला स्टॉक दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू गो फॉर प्रॉफिट बुकिंग एट दैट टाइम. हो सकता है कि स्टॉक उसके आगे भी परफॉर्म करे, बट अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इसको होल्ड करके रख रहे थे या फिर मिड टर्म के लिए होल्ड करके रख रहे थे, देन यू कैन एग्जिट द स्टॉक. So this was about the investment ideas. Now I am moving to edge report segment. सर लॉन्ग टर्म को हाउ लॉन्ग पूछ नहीं सकते. लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है. सम पीपल फील इट्स 2 to 3 years. सम पीपल से फील कि 10 से 15 साल भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है. सो इट्स अपॉन यू. It's ideal if you keep it for more than 2 years because then only you will be able to see all the business cycles. एक कंपनी को परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट एक पूरी बिजनेस साइकिल लगती है, विच मीन्स 4 quarters एटलीस्ट. सो एज रिपोर्ट की तरफ आते हुए हम देख रहे हैं कि एज रिपोर्ट में अगर आप इस फिल्टर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई सारी की सारी एज रिपोर्ट्स यहाँ अवेलेबल मिलेंगी, बीइंग इट केस स्टडी, कॉन्कॉल एनालिसिस, infographic, IPO notes, stocks to watch. You can just click on anyone that you want to see. और उसके अंदर आपको अब तक की सारी अपडेटेड केस स्टडी मिल गई. सिमिलरली हाल फिलहाल में अर्निंग सीजन कंप्लीट हुआ है, तो अर्निंग सीजन के वक्त सारी कंपनीज, मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज होल्ड देयर कॉन कॉल. तो हम कॉन कॉल्स अटेंड करके उन कॉन कॉल्स के ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं, विच इज आवर कॉन कॉल एनालिसिस. अब जैसे ही फिल्टर करेंगे आपको अभी इस सारे क्वार्टर की कॉन कॉल रिपोर्ट्स यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी. अगर आपको एक पर्टिकुलर कंपनी पर सर्च करना है तो अगर आप ब्लू डार्ट सर्च कर रहे हैं तो देखिए ब्लू डार्ट की अब तक की सारी कॉन कॉल रिपोर्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे देंगी. अब अगर मैं आती हूँ इन्फोग्राफिक्स ऑप्शन पर, तो इन्फोग्राफिक्स ऑप्शन में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जैसे कि 5 कंपनीज नियर ब्रेकआउट लेवल जो कि हर वीकली बेसिस या हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो मिल जाएंगी. उसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स सच एज इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, उनसे रिलेटेड डेटा एक स्नैपशॉट में कॉम्पैक्ट एंड कंसाइज फॉर्मेट में आपको मिलेगा. जैसे कि एक पे हम क्लिक करके अगर देखते हैं तो ये है अट्रिशन लेवल से रिलेटेड इंफोग्राफिक. तो जितनी बड़ी आईटी कंपनीज हैं जिनका अट्रिशन लेवल सबसे कम है, यानी जहां पर एम्प्लॉयज जल्दी छोड़ करके नहीं जाते, सिंस आईटी कंपनीज का बेसिक एसेट ही उनका ह्यूमन रिसोर्स है, उनके एम्प्लॉयज हैं. तो जिस कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉयज छोड़ करके जा रहे हैं वो आईटी कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है. सो जिन कंपनीज में अट्रिशन लेवल लो है हमने उसका एक बहुत कंसाइज स्नैपशॉट बनाया है. आपको इसको देख करके समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये 10 कंपनीज हैं, आउट ऑफ दिस 10 आई माइट गो फॉर फर्दर स्टडी एंड देन आई विल डिसाइड कि कौन सी कंपनी मेरे को चूज करनी है. सो दिस वाज अबाउट द एज रिपोर्ट. यू विल आल्सो गेट द आईपीओ नोट्स. जैसे कि अगर आप एनटीपीसी ग्रीन में आपको अप्लाई करना था, यू कुड हैव गॉट एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ नोट फ्रॉम योर. If you want to just look at the previous IPO note and cross check what kind of rating we had given, like we had given good rating for Swiggy, and it has performed really well post IPO. So that was about the edge report segment. Now I'm coming to investor portfolio. Under investor portfolio, you'll get all the big names. यानी जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो सारे इन्वेस्टर्स की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी. और उसके साथ साथ आपको दिखाई देगा कि वो कौन कौन से स्टॉक्स में होल्ड कर रहे हैं एंड उनका लास्ट जो सबसे अच्छा परफॉर्मर था कौन सा स्टॉक था. जैसे कि आप अगर देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला के पास उनके पास राघव प्रोडक्टिविटी इनहैंसर का स्टॉक था जिसने लास्ट 3 महीने में 50% का रिटर्न दिया है. इफ यू वुड हैव जस्ट फॉलोड हिज स्टॉक्स थ्रू द शेयर होल्डिंग टैब,
आपको पता चल जाता है कि ऐसे कौन कौन स्टॉक्स हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है. इफ यू आर फॉलोइंग हिज आइडियोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट, you can make the key changes according to him. You'll also get the brief idea of deals and block deals and insider deals that this investor is doing. उसी तरह अगर आप आशीष कचोलिया जी को अगर आप नोटिस कर रहे हैं, तो उनका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में दिखाई देगा. यू कैन सी दिस चार्ट, हिज सेक्टर एलोकेशन, हिज शेयर होल्डिंग डिटेल, key changes made by him. So all these data is provided to you on just one page basis. आपको कोई रिसर्च वर्क नहीं करनी है. आपको अगर सिंपली किसी एक इन्वेस्टर से बहुत इन्फ्लुएंस होकर के आप उनकी किताब पढ़ रहे हैं, या फिर आप उनको CNBC TV 18 या जी न्यूज, जी बिजनेस पे देख रहे हैं, and you just want to follow his ideology for investment, you can just search for this person's name over here. For example, if I want to search for R.K. Damani, I have just written Damani and उनके नाम से दो अलग अलग इन्वेस्टर्स यहाँ क्रिएटेड है. आई लुक एट हिज शेयर होल्डिंग एंड देन फिगर आउट कि कौन सा स्टॉक मेरे को पसंद है, एंड आई लुक फॉर इन्वेस्ट. That was about investor portfolio. Now moving on to investment themes. इन्वेस्टमेंट थीम्स के अंदर हमने बहुत सारी बिगर टॉपिक्स या बिगर चैलेंजेस को लेकर के अलग अलग क्लासिफाइड फॉर्मेट में थीम्स डिसाइड की है. For example, if somebody wants to go for renewable energy investment, if somebody wants to invest in green hydrogen, and just for upcoming period is for wedding season, November, December, January, February. So during this period, there will be demand because of the wedding season. There are companies which are going for big capacity expansion. आप वो सारे स्टॉक्स को भी देख सकते हैं. तो क्योंकि आपके पास यहाँ पर थीम्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, आप बहुत इजीली इसको गो थ्रू करेंगे, और गो थ्रू करने के साथ साथ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन्वेस्टमेंट थीम. पूरा डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है, as well as you'll get the list of stocks which are good under that particular investment theme. हो सकता है इस इन्वेस्टमेंट थीम में और भी बहुत ऐसी कंपनीज होंगी जो काम कर रही है, बट वी फील दैट दोज कंपनीज might not be good for investment. That's why we have provided only good companies which have good fundamentals and good future prospect for investment purpose. अगर इन सारी कंपनीज में से किसी पर भी एज रिपोर्ट प्रोवाइडेड है, तो यू विल ऑल्सो गेट दैट एज रिपोर्ट अंडर द सेगमेंट. Sir, I'm trying to balance between Hindi and English. If still somebody is having any issue or facing any problem, you can ask your particular question and specify in which language I need to explain. Okay, I'm trying to balance both. So investment themes include all these themes that you can see on my screen right now. You can also check on the app by yourself. For example, ethanol was in news for some time, and these were the stocks which were positively affected by that news. So you can get that list easily. If ethanol comes in news once again, or if digital evolution is coming in the news once again, you know where to go on the app. You can just come to investment themes and check which are the stocks that are good for investment according to that particular theme. For example, if you see that crude price is falling and there is an anticipation in the market that crude price will fall further, you can check the falling crude theme and then select the stocks that you're going to invest. Okay, so this was about the investment theme. Now I'm moving to company filings. So under company filings, you'll get the categorization of the files which have been submitted by multiple companies to the exchanges. हर कंपनी को, हर एक कॉर्पोरेट हाउस को
जो भी मार्केट में लिस्टेड है उसे एक्सचेंज को, सेबी को बहुत सारी फाइलिंग्स देनी पड़ती है. दे हैव टू मेक क्लैरिफिकेशन, दे हैव टू प्रोवाइड एनुअल रिपोर्ट एंड गिव क्लैरिफिकेशन वेदर दे आर गोइंग फॉर बोनस इशू और स्प्लिट. सो अगर आप हर एक कंपनी की जाकर के कंपनी फाइलिंग देखने लगेंगे तो इट विल बी वेरी क्लस्टर्ड एंड आपको बहुत क्लटर्ड रहेगा, आप देख नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे. सो फॉर मेकिंग दैट इजियर, दैट प्रोसेस, टीडीएस प्रोसेस को इजियर बनाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर आपको कैटेगराइजेशन दिया हुआ है. आप आसानी से अपने पर्टिकुलर थीम के अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उस टाइप ऑफ कंपनी फाइलिंग को फिल्टर आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सी कि कोई नया ऑर्डर आया है क्या किसी कंपनी में, तो आपको न्यू ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें नया ऑर्डर रिसीव हुआ है या नए ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी रेल विकास निगम हैज announced letter of acceptance for receiving some order from railway. तो अब क्या करेंगे, जब आप वहां पर क्लिक करें, you will be redirected to the stock page and then you can click on this PDF option. You will get that announcement PDF also so that you can read in detail now. आपको हमने एक समरी प्रोवाइड कर दी कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने न्यू ऑर्डर की इंफॉर्मेशन दी है. देन यू गेट रीडायरेक्टेड टू दैट पेज, पर्टिकुलर पेज ऑफ द कंपनी, and thereafter you'll also get the entire announcement that has been submitted by the company on exchange. So it makes it a bit easier to figure out which stocks are going to perform well next day. For example, 26 तारीख को अगर आपको ये सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं जिन्होंने ऑर्डर रिसीव किया है या कुछ ऐसा नोटिफिकेशन दिया है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे सम ऑफ द स्टॉक्स विल परफॉर्म बेटर. अगर कोई कोई कंपनी है जिसका इंटायर रेवेन्यू ही 2000 करोड़ का है एंड दैट कंपनी हैज रिसीव 6000 करोड़ वर्थ ऑफ ऑर्डर फ्रॉम वन क्लाइंट ओनली, ऑब्वियसली द स्टॉक इज गोइंग टू परफॉर्म वेल. एंड नेक्स्ट डे हो सकता है वो स्टॉक 10%, 15% अप हो. तो बिफोर हैंड यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर. This was about company filings. I'm moving on to the last feature that we are going to talk about, which is SME zone. Under SME zone, you are going to get all the list of the stocks which are only small and medium enterprises. These are listed not on the main board of exchange but on SME zone. So ये SME zone के बहुत सारे अलग-अलग criteria है for investment, for IPO. There is this entire blog that we provided over here. आप इस blog को पढ़ करके SME के पूरे concept को पहले समझिए. Before understanding, you should not go for SME investment because many people are stuck after going for IPO of SME. So SME zone के अंदर हम अपने ऐप पर क्या क्या आपको प्रोवाइड करें. I'll give a brief idea. We are providing the performance up to 5 years. So if you just want to download that data, you can download from here. This option is provided. You can see daily gainers and losers also under SME especially. If you want to just check कि last 1 month में SME zone में कौन सा ऐसा stock है जिसने बहुत अच्छा perform किया है, you can check from here. And thereafter अगर कोई stock है जिसने बहुत ही अच्छा outperforming result दिया है, that option is also available. For example, Trident Tech Labs has provided at least 2.5x of growth on sales as well as 6x growth for EBITDA. So यहाँ से देख करके हमें समझ में आ रहा है कि ट्राइडेंट ने बहुत अच्छा काम किया, ट्राइडेंट टेक लैब्स ने. And then you might go into deeper research and try to understand what the company does and all. So that was about SME zone. Now I'll take the questions. If you have any question, kindly post that in the chat box. Blog link. Okay, I'm sharing the blog link.
Anil sir, recording will be available after the session is concluded. You will get that on StockEdge social also if you are part of that. Otherwise, you can talk to the customer delight team once. Vishal sir, we are not discussing scan today. It will be discussed in another session. Ashish sir, backtesting feature is not provided for users, but if you go for the strategy segment, that is backtested by us, by our team. टेक्निकल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आज आंसर नहीं कर पाएंगे बिकॉज आज का सेशन कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है. इम्तियाज सर, फिल्टर ऑप्शन किस पोर्शन में चाहिए आपको? आप एक बार मेंशन करेंगे प्लीज, क्योंकि फिल्टर ऑप्शन बहुत सारे पेजेस पर अवेलेबल है ऑलरेडी. Shashank sir, you can download the PDF for investment ideas. If you just want to search for some company, for example, Dabur, तो अगर आप डाबर पर क्लिक करेंगे आपको व्यू रिपोर्ट ऑप्शन आएगा and then you can download that PDF very easily. If you want to download the entire list, that option is not available. Dibyendu sir, yeah, attrition level is very good idea to judge IT companies, but not always. There are multiple other criteria also. The ratios are there, and you have to see what are the future prospects of the company. Varun sir, scans won't be explained today. You can talk to customer delight team. They'll tell you scans कब discuss होंगे. Sector rotation भी किसी और सेशन में डिस्कस होगा, आज नहीं. Praful sir, thank you for your suggestion. If it is possible, we'll certainly add this feature. Anup sir, why do you want to stop recording? I don't know. The session is being recorded by us, so it won't be recorded on your phone. Achinta sir, thank you so much for your appreciation. Yeah, that feature is very good. Sector rotation and market breadth will be explained in another session. Probably Monday. No, I cannot explain the spider chart right now. Sorry, sir. Satish sir, I already explained long-term investment theme. If you check the investment theme segment, that is for long-term. If you check the investment ideas, that is also for long-term investment. Investment list is updated on quarterly basis. If you see the con call reports are also updated on quarterly basis. The case studies are also updated on quarterly basis. Lenin sir, you will get the recorded video after the session is concluded. So Beer sir, yeah, investment in Wipro. Yeah, Wipro is included in our case study list. We are positive on it and you'll get the entire detailed report under investment ideas. Anup sir, showing on screen. What is showing on screen? If you click on your portfolio, okay, let's move to portfolio segment once. See, that is a portfolio segment that you're talking about, right? You have selected the portfolio. This is the stock list. If there is any mutual fund that you have added to it,
and edge insights, which means any big news related to it highlighted by us on StockEdge. Yes, this kind of news is available. It's not news particularly, it's a more of an update. Varun sir, if you want to go for short-term investment for 2 to 3 months, you can check our investment ideas club as well as trading ideas club. Although short term for 2 3 months, that won't be a good time period for long investment. Like it will be more of a trading. 2 से 3 महीने अगर आप कर रहे हैं तो obviously you can do based on the quarter results. If a stock has performed well on the quarter results basis or management is quite positive for the next quarter, you can go for that investment. You'll get these ideas under trading ideas and investment ideas club. Sir, your answer is here. Somebody has asked how many portfolios you can create. You can create up to 10 portfolios. I have shown you where all the answers are written. How you can use this feature, that is also given over here. I couldn't get what kind of notes you're talking about. Stock notes. Like stock notes, what kind of stock notes? Siman ji, we are not discussing intraday trading strategies. I guess all the sorry, investment related questions are over. So we'll move on to the mutual fund segment now. Con call notes for my portfolio stock, obviously. Sorry. अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में जाते हैं और स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप एज रिपोर्ट सेगमेंट की तरफ देखेंगे तो आपको कॉन कॉल वहां पर दिख जाएगा. So that was all about the equity portion. We'll move on to mutual fund. Raghav will join us. So please try to keep your questions limited to mutual fund segment after this. Thank you so much. Thank you for the evening. Hello everyone. Very good evening. I'm Raghav from Mutual Fund team of StockEdge Social. So today I'll explain you how can we efficiently use the section of mutual funds in the StockEdge app. I hope I'm audible to everyone. Okay, I got the confirmation. Yeah, so the fourth tab is the mutual fund section, and you can see all the tabs here. I'll explain in both English and Hindi, so don't worry, please. Yeah, so all these tabs have a consolidated view here. मतलब यहाँ पे आपको एक brief view मिल जाएगा जो भी tabs आपको left side में दिख रहे हैं mutual funds का. And इसमें आपको first tab दिख रहा है top performing schemes का. ये basically यहाँ पे top 5 best performing schemes है from each category. And each category, I mean, one is from equity, other is debt, hybrid, equity, ELSS, and one is ETF. So ये आपको 5 categories का जो best performing funds in the last 1 year आपको वो यहाँ visible होगा. जैसे ETF में आदित्य बिरला Nifty Next 50 ETF has given the highest return of 49.6% in the last 1 year. And large cap में equity में 34% मिला है, debt में जो best performing fund है वो आपको यहाँ visible होगा. The next tab is the AMC tab.
So let's go inside. AMC's asset management companies, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च करती है उन्हीं को एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं. So we have 44 AMCs in India right now, and you can see the top AMC is the SBI Mutual Fund. इनका AUM है 11,06,000 करोड़ का. So currently in the industry we have 68 lakhs crore of AUM. Out of that, around 15%, which is 11 lakh crore, is held by SBI Mutual Fund. So when we go inside this AMC, we can see further कि कौन कौन सा schemes ये offer करते हैं अलग अलग categories में. जो आपको यहाँ दिखेगा, ये आपको ऊपर में all the 4 categories are visible here. So this is equity category. So equity के अंदर ये जो भी funds operate करते हैं, जितने भी large cap, small cap, flexi cap, multi cap, सारे आपको यहाँ visible होंगे. And ETFs also, equity ETFs. And the other category is the debt category. So सारे debt funds जो है वो यहाँ दिखेंगे, सारे hybrid funds यहाँ पे आपको visible होंगे. And let's see this. If you select the time frame for 1 year, it will be arranged accordingly with the best performing fund at the top. So automatically ये descending order में arrange हो जाएगा with the best performing fund at the top and the least performing fund in the bottom. And if you change the time frame to 2 years, accordingly schemes के नाम भी change हो जाएंगे according to their performance. So you can check which fund have performed best within the SBI mutual fund equity category में कौन सा performance सबसे ज़्यादा अच्छा है within across the time frame of 1 year, 2 year, 3 year, and 5 year. This PM means per annum. So this 35% returns is per annum for 3 years. This is not कि 35% आपको 3 साल में मिला है. This is per annum returns. Okay. So the second type is the overview section. You can check कि SBI mutual fund कब इनसे मतलब कब लॉन्च हुआ, कब ऑपरेशनल इनका स्टार्ट हुआ, कितने स्कीम्स इनके अंडर है, what is the total AUM size, and other technical details, trustee name, sponsor name, address, and contact details. The next type is the key person. So here you can find all the fund managers of the SBI mutual fund, उनके key management team, उनके directors और सारे इनके जो fund house की operational team है, आपको सब details यहाँ मिल जाएगा. And the last tab, which is the most important tab, is the AUM tab. So ये AUM में आप चेक कर सकते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल 11,06,000 करोड़ का AUM है. एंड व्हेन यू सिलेक्ट द इक्विटी कैटेगरी, आपको सिर्फ अगर इक्विटी का देखना है तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर मंथ में इक्विटी कैटेगरी का कितना AUM था. So like this, you can check which category has the highest AUM. And you can also check class wise कि which month has the highest AUM, month and month क्या increase हो रहा है, वो check कर सकते हैं. Second type is the class wise, where you can see the category wise कि which category has the highest AUM. जैसे SBI म्यूचुअल फंड के अंदर ETFs, index ETFs has the highest AUM of 3,31,000 crores, and followed by large cap fund, contra fund, focused, and so on. एंड इनका AUM चेंज कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस मंथ, आप वो भी चेक कर सकते हैं जाके यहाँ पे. मंथ सितंबर मंथ में इतना AUM था, अक्टूबर में बिकॉज मार्केट हैज विटनेस्ड अ करेक्शन, देयर इज अ स्लाइटली डिक्रीज इन द ETF AUM. सो अदरवाइज आपको मंथ ऑन मंथ चेंज कितना होता है वो भी आपको विजिबल होगा यहाँ पे. एंड यू कैन चेक अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड एंड अदर्स, आप सारा देख सकते हैं. सर AUM मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट. SBI म्यूचुअल फंड के अंदर कितना एसेट्स उनके मैनेजमेंट मतलब उनके एडवाइजरी के अंदर है, उनके स्कीम्स में इन्वेस्टेड है, उसको AUM बोलते हैं. Are you considering rolling returns? No, sir. This is trailing returns. This is point to point returns. If I am seeing 3-year returns, that is 26th November 2024 है आज, तो इसके 3 साल पहले 26 नवंबर 2021 से लेकर आज के डेट तक कितना ट्रेलिंग रिटर्न्स आया पर एनम. इट इज बेस्ड ऑन दैट. So you can check all the categories of SBI mutual fund क्या returns वो दे रहे हैं, and you can also check scheme wise that which scheme under SBI mutual fund has given the highest returns. For example, has the highest AUM, not the returns, highest AUM. For example, SBI Nifty 50 ETF has the highest AUM. जो इनका ETF है वो उनका highest AUM है 2 लाख करोड़ के आसपास. And within mutual fund schemes, if you say blue chip fund has the highest AUM 50,000 crores. सो आप इसको मंथ ऑन मंथ भी चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं, क्लास वाइज भी चेक कर सकते हैं, एंड मंथ वाइज भी लास्ट 12 मंथ्स का डेटा है कि व्हाट हैज बीन द इंप्रूवमेंट. जैसे आप देख सकते हैं नवंबर लास्ट ईयर 5 लाख करोड़ का AUM था, विच हैज इंक्रीज टू 7 लाख करोड़ इन इक्विटी. सो दैट इज इंक्रीज ऑफ 2 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 40% का इंक्रीज हुआ है इन जस्ट 1 ईयर. सो आप ऐसे अपने एंड से रिसर्च कर सकते हैं. So likewise, you can see this for all the AMCs we have. ICICI के अंदर भी आप सेम डिटेल्स आपको मिल जाएगा उनका क्या कितने स्कीम्स है, विच स्कीम्स अंडर ईच कैटेगरी, एंड रिटर्न्स विल आल्सो बी अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. So let's go inside one of the schemes and understand in deeper. एक सेकेंड.
Yeah. So for example, let's take this only. This is yeah, within the equity, let's take SBI Contra Fund. So when we go inside the SBI Contra Fund, we can see the first page is the chart page. This is the NAV page. So NAV is basically net asset value. अगर आपको स्टॉक्स का एक प्राइस दिखता है तो म्यूचुअल फंड्स कंसिस्ट ऑफ 50 स्टॉक्स, तो 50 स्टॉक्स का एग्रीगेट वैल्यू कितना है वो आपको एनएवी में दिखाएगा, आपको एनएवी में विजिबल होगा. एंड व्हेन यू क्लिक एनीवेयर इन द चार्ट, आप उसका प्रीवियस एनएवी देख सकते हैं कि 31 अगस्त 2020 को उसका एनएवी 18 था. सो 18 से इट हैज चेंज टू 65, इट हैज इंक्रीज टू 65. सो इट हैज गिवन अराउंड 350% रिटर्न्स इन द लास्ट 3.5 years, 4.5 years. तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि उनका एनएवी कितना इंक्रीज हो रहा है. एंड एनएवी इंक्रीज जितना होगा, जैसे 25 नवंबर कल का एनएवी 1.3% से इंक्रीज हुआ कॉन्ट्रा फंड का. सो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे. द नेक्स्ट टैब इज द इन्फो सेक्शन. ये आपको स्कीम का इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है. दिस टेल्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव, कि फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है. फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रा फंड इन्वेस्ट इन कॉन्ट्रा बेट्स. दे टेक दोज स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, विद अ व्यू दैट दे विल परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर. सो दे आर टेकिंग अ कॉन्ट्रा व्यू फ्रॉम द मार्केट. सो आपको वो ऑब्जेक्टिव आपको सिमिलरली यहाँ पे भी दिख जाएगा. यू कैन रीड दिस ऑब्जेक्टिव. एंड दिस इज द स्कीम रिस्क. दिस इज अ वेरी हाई रिस्क कैटेगरी बिकॉज सारा इक्विटी एक्सपोजर है. So it is in a very high risk category. And this is the overview section where you can see कि fund house fund कब launch हुआ, the scheme particularly कब launch हुआ. 1999 को जुलाई में launch हुआ था. And उनका कितना AUM है, what is the minimum investment amount for lump sum and SIP, how much is the expense ratio of the fund, exit load of the fund, and how much is the risk rating, which is very high. And इनका benchmark index कौन सा है. Benchmark index is basically कि ये stocks जो है वो अपने performance किस इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं. सो दिस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इज कंपेयरिंग इट्स परफॉर्मेंस विद द बीएसई 500 इंडेक्स फंड, कि उनको बीट करना है. एंड इन द बॉटम वी कैन सी द की पैरामीटर्स. देयर आर फ्यू की पैरामीटर्स लाइक मार्केट कैप, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, डिविडेंड यील्ड, एंड पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियोज. So you can check all the key ratios here. The next tab is the related schemes. आपको यहाँ पे IDCW प्लान मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट प्लान मिल जाएगा, ग्रोथ प्लान मिल जाएगा, आपको सारा प्लान यहाँ पे दिख जाएगा. एंड द नेक्स्ट टैब इज द परफॉर्मेंस टैब. यू कैन सी कि फंड हाउ ये फंड कैसा परफॉर्म किया इन द शॉर्ट टर्म, फ्रॉम 1 week, 1 month, 3 month to 6 month, and in the long term, when you see 5 years return, you can see how much it has given per annum. It has given 29% returns per annum for 5 years. So the fund has performed extraordinarily well. एंड यहाँ पे आपको होल्डिंग दिख जाएगा कि फंड कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी ये कॉन्ट्रा फंड इक्विटीज में 78% का एक्सपोजर है, एंड इनके पास 12% कैश है, एंड रिमेनिंग 5% एंड 2% ट्रेजरी बिल्स एंड ओवरसीज इक्विटीज में है. अब विदिन इक्विटीज, विदिन डोमेस्टिक इक्विटीज कौन से स्टॉक्स में है, यू कैन सी इन दिस मिडिल सेक्शन, डोमेस्टिक इक्विटी सेक्शन. यू कैन सी ऑल द स्टॉक्स एंड देयर होल्डिंग, देयर करंट वैल्यू हियर. So SBI Contra Fund has the highest exposure in the HDFC Bank, 5.5% holding, followed by Reliance Industries, Tech Mahindra, Kotak Mahindra Bank. And you can also check कि उनका month on month क्या increase और decrease है. जैसे HDFC Bank अक्टूबर में 5.5% है, and September में it was 5.3%. So it has increased by 0.2% because the markets witnessed a correction. Fund house ने 0.2% increase किया अपना allocation. So you can compare accordingly. यहाँ पे भी आपको last 6 months का data will be visible to you. And this is domestic equities. So other assets में you can check कि बाकी assets जो है 78% equity में था, remaining 22% का क्या allocation है, you can check here. They have invested in TREPs and current assets, and treasury bills में भी है उनका investment, so you can check. And the next tab is the AUM section. कि SBI Contra Fund का AUM कितना increase और decrease हो रहा है month on month basis पे, you can check here. Last year नवंबर में 18,000 crores का AUM था, which has more than doubled to 40,000 crores in this year. And who is managing this fund can be seen from this fund managers tab. Dinesh Balachandran ji is managing the fund for SBI Contra, and Pradeep Keswan ji also. And when you go inside this section, you can see more details about Dinesh Balachandran ji. So you can see he is managing 5 schemes of equity and 5 schemes of hybrid. So you can check all the funds which are managed by Mr. Dinesh ji. And उनका क्या performance रहा है, you can see here in 1 year, 2 year, 3 year time frames. Generally, equity schemes are recommended for more than 3 to 5 years. So please check long-term performance. Do not see 6 months or 1 year performance and start investing.
एंड यू कैन सी द ओवरव्यू सेक्शन में आपको फंड मैनेजर के बारे में डिटेल्स दिख जाएगा कि उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड द बेसिक डिटेल्स अबाउट हिज पास्ट हिस्ट्री, कि वो पहले कहाँ काम करते थे एंड व्हाट इज हिज एक्सपीरियंस कैन बी सीन फ्रॉम हियर. सिमिलरली यू कैन चेक फॉर प्रदीप केसवान जी ऑल्सो. सो आपको इसमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि विच ऑल स्कीम्स आर मैनेज बाय हिम, हाउ हैव दे परफॉर्म्ड एंड व्हाट इज देयर बैकग्राउंड. ऑलराइट. या सो द लास्ट टैब इज द रेशियोज टैब. तो रेशियोज में आपको की रेशियोज दिख जाएगा, लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है फंड का बीटा एज इन वॉलेटिलिटी कितना है. अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो यू कैन सी दिस इन्फो सेक्शन एंड दे विल टॉक अबाउट मोर. यू कैन सी हियर कि क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या इनका सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा. यू कैन ऑल्सो चेक अवर ब्लॉग एंड इट विल गिव यू अ मोर डिटेल्ड व्यू कि कैसे यूज करना है ये सब रेशियोज को. एंड आपको शार्प रेशियो, ऑर्डिनल रेशियो, सारे मेजर रेशियोज जो स्कीम्स में होते हैं वो आपको सारे यहाँ विजिबल है, एंड देयर significance also can be seen from this info tab. So let's move forward. The next tab is the MF classes tab. One second. How to check initial launch mutual fund like Tata Innovation. Yes, sir, we will come to that, sir. How we can find stocks, mutual fund are investing in particular scheme. Sir, like I already showed you कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उनका होल्डिंग्स कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर. डोमेस्टिक इक्विटी में जाके उनका मंथ ऑन मंथ कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं. ये फ्लैट है. क्वांटिटी ऑफ शेयर्स यू कैन चेक कि हाउ मच इज इट इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग, बिकॉज मार्केट वैल्यू कैन डिफर. अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो उनका मार्केट वैल्यू भी ऊपर जाएगा. सिमिलरली अगर नीचे आएगा तो मार्केट वैल्यू भी ड्रॉप करेगा. बट यू कैन चेक द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द नंबर ऑफ परसेंट as holding. Yeah, so let's move forward. The next section is the mutual fund classes. One second. Yeah. So MF classes, you can see here there are four categories: equity, debt, hybrid, and others. And within equity, we have many categories like large cap fund, mid cap, small cap, large and mid, multi cap, flexi cap, ETFs, focused funds, and many others. You can check. Sectoral funds अभी बहुत hype में है. So you can check all the categories here, and you can see the time frame also here. So when you select 2-year time frame, for example, so you can see 18.4% return here. So this is the category average returns of large cap fund. Let's go inside. यहाँ पे भी आपको visible होगा. So yeah, you can see it's 18.4%. So you can compare that Nippon India Large Cap Fund has given 24.5% returns in 2 years, which is above the category average returns of 18.4%. So you can analyze accordingly कि ये fund अपने benchmark के average जो returns है, अपने category के जो average returns है, उनको beat किया है. It has outperformed the average returns of all the schemes. And you can see here, for example, UTI has given 15% returns per annum, 15% returns, and which is below the category average returns. So it has underperformed the average performance. So अगर total large cap fund में अगर 20 schemes है, तो 20 schemes के जो performance का average है, that is this 18.4%. And when you change the time frame, you can see the returns have changed, and you can analyze accordingly कि कौन सा better perform कर रहे हैं. So the next tab is the overview tab. Within the overview tab, you can see कि ये कौन से क्लास में है, which is the category of large cap fund, and उनका क्या description है. For example, large cap fund invest in companies of the top 100 companies from the 1 to 100 company as per market capitalization जो इंडिया में है, उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. They cannot invest in mid cap stocks that is beyond 100 companies. So यहाँ पे brief video भी है, you can check at your own space. And you can check the AUM also कि large cap category में कितना AUM increase हो रहा है. This is we are talking only about the category of the large cap currently. So you can see कि अक्टूबर में इतना AUM था, सितंबर में से डिक्रीज हुआ है अक्टूबर के AUM, and month on month you can check the last 12 months data. And AMC wise also कि within large cap fund which AMC within the large cap has the highest. For example, ICICI का जो large cap category है वो highest performing highest AUM उनके पास है. एंड आईसीआईसीआई का कौन सा स्कीम के पास है, ब्लू चिप फंड. यू कैन सी स्कीम वाइज ऑल्सो आईसीआईसीआई ब्लू चिप हैज द हाईएस्ट, फॉलोड बाय एसबीआई ब्लू चिप, मेरा एसेट लार्ज कैप फंड, एंड सो ऑन. एंड विद इन अक्रॉस डिफरेंट मंथली टाइम फ्रेम एंड अक्रॉस डिफरेंट एएमसीज यू कैन चेक. Excuse me. The next tab is the key parameters tab.
सो यहाँ पे आपको सारा की रेशियोज मिल जाएगा विच वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट, मार्केट कैप, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड. सो यू कैन चेक रिगार्डिंग ऑल दी स्कीम्स विद इन द लार्ज कैप कैटेगरी कि क्या उनका रेशियोज है, आर दे अट्रैक्टिव इनफ, मतलब उनका प्राइस टू अर्निंग काफी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है या स्टिल दे आर ओवर वैल्यूड, यू कैन कंपेयर. Similarly, you can check for all these schemes, all the categories here. You can see for all large and mid cap, multi cap, flexi cap. Within flexi cap, you can see which has performed the best within the last 5 years. Quant flexi cap has given 30% returns annually in the last 5 years, followed by Parag Parikh fund. If you go inside, you can see their holdings and other details. आप सब check कर सकते हैं across all categories. And the ones who are looking for ETF also will be visible in the equity category. You can see here. यहाँ पे आपको ETF इंडेक्स दिख जाएगा, सारे ETF जो भी लिस्टेड है मार्केट में सारे आपको यहाँ पे विजिबल होंगे. ऑलराइट. So the next tab is the fund manager section. So you can also check fund managers from this tab, or you can go inside a particular scheme and वहां से आप fund manager देख सकते हैं कि कौन उनका fund manager है. So I have already explained you कि कैसे check करना है. If we see Ravi Prakash Sharma ji, these are all the schemes managed by him and their returns in the 1 year, 2 year, 3 year time frames. So I'll not explain it again. So the next tab is the MF investment themes. So just like we have investment themes in the stocks category, in the market category, we have the similar category. Yeah, we have the similar category in the mutual fund investment themes. यहाँ पे जो भी top investment themes है, उसके अंदर जो mutual fund schemes operate कर रहे हैं, वो आपको यहाँ visible होंगे. For example, the first theme is tax saving investment. So you can go inside this and check what is the overview of this particular investment theme. You can get a tax benefit of under section 80C. What is the benefit of investing in this theme, and how do we shortlist this theme in the StockEdge, and a brief disclaimer and a video also you can see at your own space कि उनका क्या impact है. And this the second tab is the schemes tab. These are the 5 schemes recommended by StockEdge. They are included within this particular theme based on many criteria as AUM, their fund house reputation, fund manager performance, and every other criteria. What is the standard deviation in mutual fund? So standard deviation, basically, if I give you a brief example, कि अगर कोई fund का performance 20% है और अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10% है, तो मतलब उसका रिटर्न्स जो है वो 20% से 10% प्लस एंड माइनस डेविएट कर सकता है. मतलब इट कैन आल्सो गिव यू 10% रिटर्न्स एंड इट कैन आल्सो गिव यू 30% रिटर्न्स ऑन द गुड डेज व्हेन द मार्केट्स आर बुलिश. सो 10% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन अ 20% रिटर्न्स मीन कि आपका रिटर्न्स जो है वो 10% से डेविएट हो सकता है इन बोथ द एंड्स, अपसाइड आल्सो, डाउनसाइड आल्सो. So yeah, so this was all about investment themes, and there are many themes like this. You can check high beta funds, international funds, flexi cap funds, moderate risk, and regular income funds, which is debt funds. So blue chip companies, and there are many other themes you can check. And their benefits to invest. There is a tab also here, info tab. You can check kya unka introduction and how to use this section. So let's move to the next tab, that is the AUM analysis, which is the most important tab. So this section talks about the overall industry का जो AUM है उसके ऊपर. So you can see in the industry AUM we have around 68 lakh crore of AUM as on October. So for the November data we can expect around 15 December तक, within 10 to 15 days November का data will be released. So this is till October. And if you want to see only category wise equity category का कितना है, so you can see 37 lakhs crores approx equity AUM है. And you can see AMC wise we have already seen SBI has the highest with 11 lakh crores, and class wise also we have seen that ETF index has highest of 6 lakh crores. So आप month on month check कर सकते हैं data, आप AMC wise भी check कर सकते हैं and month wise भी check कर सकते हैं. So when you go AMC wise में, you can see scheme wise also. For example, if you are going to SBI mutual fund, you can see which scheme within SBI has given the best returns. Sorry, which scheme under the SBI mutual fund has the highest AUM. These are AUM, not the returns. So the next tab is the NFO section. There was a query in the chat, Chetan ji. So you can see here.
So these are the ongoing NFOs जो funds अभी currently subscription के लिए available है, वो आप check कर सकते हैं कि उनका issue date क्या है and close date क्या है, open date and close date. So these all categories within equity categories, these all schemes are currently open for subscription within the equity category and debt के अंदर आपको ये सारे schemes अभी currently NFO के लिए open है, you can check. Let's see, Motilal Nifty Capital Market Index Fund. इसका offer price 10 का है and it has opened 26 November today only and it will close on 10th December. When you go inside this, you can see further details कि इनका minimum investment amount कितना है, lump sum and SIP का, exit load कितना है and how much is the risk rating and the benchmark. And the key parameters is not yet visible because once the fund operates within 1 to 2 months, this will be available. And you can see the objective of the fund and who is managing the particular fund. And the upcoming NFOs are visible here, जो अभी currently launch नहीं है, which will start from 6th December. The upcoming NFOs are listed here for both the categories, equity, hybrid. अगर debt का भी होगा तो debt का भी यहाँ पे add हो जाएगा. अभी debt का कोई upcoming NFOs नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है. And the recent tab talks about the recently closed NFOs, जो NFOs already close हो चुके हैं उनका. So you can see last 3 months data here. You go inside, you go down, you can see. So you can see, yeah, you can see all the performance of the fund कि उनका inception date 18th October को था, market is falling, so they have given negative returns of 6.2%. So likewise, you can check for all the categories, equity, debt, hybrid and others. So this is regarding NFO. NFO is new fund offering. So mutual fund अगर कोई fund launch करते हैं तो वो यहाँ पे आपको visible होगा. So the next tab is the custodian tab. Within the custodian is basically जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो भी स्टॉक्स के होल्डिंग है वो ये सारे होल्ड करते हैं, ये सारे बैंक्स होल्ड करते हैं. Custodians are banks. So HDFC Bank is a custodian for ICICI mutual fund, HDFC mutual fund, Quant mutual fund and so on. ये सारे स्कीम्स के जो भी स्टॉक्स है वो HDFC बैंक के अंदर होल्ड है. दिस इज टेक्निकल, दिस इज नॉट मच यूज्ड बाय अस फॉर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट्स गुड टू नो. And same thing with registrar. This is also not very used by us retailers, but there are two types of registrars. One is CAMS, the other is K-Fintech. So all the 44 AMCs are either empaneled with CAMS or K-Fintech. When you go inside, you can see कि कौन-कौन से AMCs है. जैसे CAMS के अंदर ये सारे AMCs आपको empaneled है. तो अगर आप कोई भी SIP अपडेट करते हैं, आपको कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, KYC, कोई भी डॉक्यूमेंट टेक्निकल काम होता है तो वो CAMS के थ्रू होते हुए AMC के पास जाता है. So this is also very technical. This is not required for us for analysis, but it's good to know. So how to buy best time mutual fund? Sir, we cannot recommend you a particular mutual fund. You have to ask your query in the StockEdge Social Mutual Fund Club Solving Query. वहाँ पे आपको सारा response मिल जाएगा. Imtiaz sir, please you have to put your queries in the StockEdge Mutual Fund section. Yeah, so any other queries? I'll wait for 2 minutes. We have come to the end of the session. So if you have any queries regarding stocks, fundamental or technical, you can post in our StockEdge social fundamental clubs and technical clubs. If you have any mutual fund related query, you can post in the mutual fund club. Or if you have any conceptual based queries regarding learning to invest or learning how to trade, if you want to learn how to trade, you can put your queries in the learn to invest and learn to trade clubs we have in the StockEdge social. Time period for investing in NFO. Sir, NFO is open for 15 days. Generally, it is open for 15 days. It can be lesser also. It varies from 5 to 15 days, but more 90% of the schemes are launched for 15 days. So within the NFO time period, you can invest. Like you can check here. I'll show once. Yeah, so this Motilal Oswal Nifty Capital Market Index Fund is open from 26th November from today till 10th December. So you can invest anytime in between this time period. Can large cap fund include small cap stocks? It's a nice question. So large cap funds can invest 80% of their portfolio in large cap stocks only.
80% कंपल्सरीली उनको लार्ज कैप में ही करना होगा. द रिमेनिंग 20% दे कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप और मिड कैप और एनी अदर प्लेस. दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन लार्ज कैप अगेन. सो वो 20% फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा लार्ज कैप फंड्स को. अदरवाइज 80% ऑन अ कंपल्सरी बेसिस दे हैव टू इन्वेस्ट इन द लार्ज कैप कैटेगरी ओनली. You can find it from here also in the overview section. See, minimum investment in equity. One second. Yeah, minimum investment in equity instruments of large cap companies, 80% of total assets. The remaining 20% can be flexible in all the category, in any category. So difference between MF and MTF. Sir, MTF क्या होता है? MTF तो there is nothing as MTF. Sir, ETF, you mean ETF, I think. So mutual funds and ETFs. So ETF are traded on stock exchanges, just like stocks. We buy and sell using our demat account. वैसे ही आप ETF को ट्रेड कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको SIP या फोलियो के थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ेगा. लिस्टिंग गेन के बाद सेल किया जा सकता है. सर एनएफओज में लिस्टिंग गेन नहीं होता. इट इज नॉट सिमिलर टू एन आईपीओ. आईपीओ इज अ कंपनी who is launching its public issue for the first time, and NFO is a new scheme offered by a particular AMC for public to invest. So इसमें लिस्टिंग गेन का कुछ नहीं है. इसके अंदर जो कोई पर्टिकुलर अगर म्यूचुअल फंड अगर एनएफओ लॉन्च कर रहा है, उसका क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, आपका क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन है, क्या रिस्क प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंगली यू शुड इन्वेस्ट, नॉट फॉर लिस्टिंग गेन्स. Is there any locking period in NFO? So there is no locking period in NFO. However, there is an exit load. If you redeem your funds before the exit load, there will be a small charges. For example, only we'll take this again, Motilal Oswal Nifty Capital Market. You can see there is an exit load of 1% if you redeem before 15 days. If you redeem on the 16th day, there will be no exit load of 1%. This 1% will not be charged. बट अगर आप 15 दिन के अंदर इसको सेल करेंगे तो आपको चार्जेस 1% का पे करना पड़ेगा. रविकांत जी, सर नेस्डैक 100 ETF में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? सर अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है कोई भी ब्रोकरेज का या कोई भी बैंक के थ्रू या कोई भी, मतलब अगर आपके पास डीमैट अकाउंट ऑपरेशनल है, सो यूजिंग स्टॉक मार्केट, यूजिंग एनी स्टॉक एक्सचेंज, यू कैन सर्च MON 100 and you can purchase an ETF for that. You can ask the question in StockEdge Social. You will get a detailed answer for this. So no more questions. I would like to wrap up the session today. Thank you everyone for your participation. Have a nice evening. Thank you everyone.